So, okay, I was talking that till now you all must have got an idea about at least 3, 4 marketing research applications, right? We have understood technically, I have shown you how to use factor analysis in understanding and applying your marketing concepts to get the solutions for various kind of your daily issues. For example, you are a marketing person working in particular company or working in particular uh, uh, domain of solving marketing issues for formulation of marketing strategies, right? When you talk about resolving marketing issues, it's always a part of strategic marketing. Always remember, right? So most of the times resolving issues, once issues occurred in the business, is a different thing, but identifying future data, identifying the information which will be useful for the future decision making, future planning, that is also a kind of uh, the kind of function of marketing research, which we can call it as the marketing intelligence, right? And when I was talking about unit 1 and 2, I have clearly differentiate you people about what is marketing research, what is marketing intelligence, and how marketing research will help sometimes to develop your marketing intelligence as well. So marketing research is not only a problem solving activity, right? कुछ प्रॉब्लम आता है तभी हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, ऐसे नहीं है. Companies, marketers always keep doing consumer research for identifying their future trends, their future requirements, their future demands, the various activities which are they are expecting to be happen in future related to their product, right? So product के बारे में उस segment में future में क्या क्या हो सकता है, कितने कंज्यूमर बढ़ सकते हैं, कितने कंज्यूमर्स कम हो सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स पे लोग ज्यादा फोकस करेंगे, प्रोडक्ट का कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जिस पे लोग कम फोकस करेंगे, टू आइडेंटिफाई ऑल दोस थिंग्स फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग. Understand my words. To understand, to identify these opportunities, these issues for future decision makings, you may need to use marketing research or research concept in order to get future information. That will be called as data mining, right? That will be called as data mining. So what do you mean by data mining? Data mining is like creating new information from the unknown existing sources of your information. आपके पास कुछ पड़ा हुआ information है, already है, but आप क्या कर रहे हो? You are scrutinizing, you are screening, you are processing that already stored data or already stored resources from you can collect some data. अब resources क्या क्या हो सकते हैं आपके कंपनी में? आपके कंपनी में आपका स्टाफ रिसोर्स हो सकता है, आपके कस्टमर रिसोर्स हो सकते हैं. All the stakeholders could be a sources of resources for you in order to collect data, right? If you look in perception of the marketer, all the stakeholders who are having some part in your business can be a sources of data for you. So as a marketer, you always have to understand few things, that you have an opportunity to collect data from your stakeholders, so you should take their data first. सबसे पहले आप अपने stakeholders को identify करना चाहिए, right? You have to understand their need, their requirement, their opinion, their suggestions about developing new product, right? So if you are not considering what your customers are thinking and developing your own product, that may not be accepted in the market, though you consider yourself as it's a very good quality product. You yourself are claiming that yes, it is very good quality, we have maintained high international standards and everything, and you are coming with new product. Probably that may not help for your customers, because you never know how customers wants to use that product, right? So always what happens, whenever companies create new products, what they do, they do prototyping, right? They do test marketing. They create a prototype, you might have heard many times about beta versions of different applications, right? Google Play Store पे बहुत सारे beta versions available है. आप लोगों ने बहुत टाइम सुना ही होगा कि this is the application for which beta version is applied, and beta version is released, and you can download that beta version and be a part of beta version trial user and all, right? So what companies does, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, वो कस्टमर्स को यूज करने के लिए देते हैं, देन उसका रिव्यू लेते हैं, एंड बाय implementing all those reviews, recommendations,
requirements of customers in that product, they come up with the final product. तो उसके बाद भी टेस्ट मार्केटिंग होता है. Once they launch a final product, they launch that product for particular segment, right? ऐसा कभी होता नहीं कोई कंपनी आई पूरी दुनिया में एक ही साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. Even though Tesla also have not launched their electric vehicles in all the countries, right? कुछ सेगमेंट्स होते हैं एक कंट्री में भी, पूरे कंट्री में नहीं करते, कुछ स्टेट्स में करते हैं, कुछ सिटीज में लॉन्च करते हैं. They do a test marketing first. They check whether the product is performing as per the requirements of customers and as per the strategies of company, and then it comes to a market, right? So there is a very huge scope to use market research in various functions, right? So where and how you can use market research, like whenever the problem comes to solve this problem, or whenever you want to have some future information for decision making, then also you can use the market research. So when we as a marketer look after the research functions, I have told you few techniques by which you can find out information which will be helpful for you decision making in the company. Like मुझे अब तक ये लगता है कि आप लोगों को कम से कम फैक्टर एनालिसिस समझ में आ गया होगा, कैसे करते हैं, उसका डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, राइट? सो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, perceptual mapping is something that you can understand how you can put it in your own research. Application धीरे धीरे सीखो. Perceptual mapping where it helps you all, right? So when you work as a marketing manager, you need to mine, or you need to identify, or you need to dig out for the data which is from your internal customers, right? So when you talk about internal customers, who are your internal customers? Internal customers कौन कौन हो सकते हैं? All the people those who are involved into a product development process. यहाँ पे देखो, all the people those who are involved into a product development process. So you will tell me that, sir, how employees could be a customers? See, it is a conceptually consider that employees are customers, because see, in this picture you may understand voice of customers. Who takes the voice of customers? Try to understand the product development process. थोड़ा सा theoretical concept है, but very interesting, where the research comes into picture into the first phase of product development itself, right? So voice of customers is taken by or heard by these people, those who are into the process of product development, and then they come to the final products, and then it goes to the public, and the user of that product would be considered as the external customer, right? So process को समझने का कोशिश करो. Internal customers are defined as the people those who are inside your company. People those who are inside in your company, they have to think like customers. Then only they can create a customer's requirement as per customers have demanded. अगर ये कस्टमर के जैसा सोचेंगे, कस्टमर के जैसा देखेंगे हर प्रोडक्ट को, तभी वो प्रोडक्ट बन पाएगा जो कस्टमर को एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, right? So they are also called as the internal customers, who inspect the requirement of developing particular product as per the need of customers, right? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Till now कुछ कनेक्ट हो रहा है? What am I trying to say? I just want to tell you that what do you mean by internal customers? पहले ये समझो, what do you mean by internal customers? So internal customers are those who are the employees of your company, who need to think like a customer. That's the reason they are called as the internal customers. If your people are not thinking in the mind of your external customers, those who would be the user of your product will not be prepared as per the requirements of the real users of that product. So the people those who are inside your department are your internal customers. You can look into this diagram. This is like employees, owners, and your representatives are your internal customers, right? Who are your internal customers? Entire employees, owners, and representatives in the sense like those who are getting into market or brand endorsers. We can call them a celebrity people, representatives of your people. They are also internal customers, right? In most of the times when celebrity endorse a product in advertisement, you could have seen that they say that I have used that product, so I have got an energy, and then I have won the match. Something like Boost is the secret of high energy, said by the Sachin Tendulkar, right? So they are representative. They are also internal customers of your product. They should behave like a customer. Representative of your product should behave like a customer, and that has to be told to the external customers that yes,
this works for you and you have to use that particular thing, right? So employees are like required to be a internal customers like by default, वो तो internal customers होने ही चाहिए, क्योंकि employees internal customer नहीं है तो requirement ही समझ में नहीं आएगा, अगर requirement समझ नहीं आया तो final product बनने में बहुत दिक्कत आएगी, right? So employees, owners, they are also mentally internal customers, and together they create a product which has been like heard from these people. जैसे customers को voice को सुन के वो सब समझेंगे, फिर customer को they will put their sense in the shoes of customers, and then they will think to develop a new product, and they will have an company, and this product will go to the external customers. Those are final users. कौन है customers? Final users कौन है? Suppliers, customers, society, government, creditors, stakeholders, shareholders. These are all the people, those who are external customers of the company. So customers के लिए customer is not only the person who uses the product. If logically, if you think, if philosophically if you think, हम जानते क्या है? The person who uses the final product is a customer. Not necessary, right? Conceptually, customer can be everyone who is a stakeholder of that company. So जितने stakeholders हैं उन सबको customers बोला जा सकता है. Conceptually, in the sense like philosophically, company चलती कैसी है? कस्टमर के जैसा किसको किसको सोचना चाहिए, ऐसा अगर सोचेंगे तो conceptually, when you talk about theoretical definition of customer, that will go into a marketing field only, which is like those who use as the customer, those who use or purchase the product for resale and all. So definition के wise अलग है, conceptually देखोगे, logically देखोगे, तो customers are like all the stakeholders. So internal customers are like stakeholders who work within your company. So that can be everyone in your team. What is important among your internal customers? A synchronized decision making, a harmonious relationship between your various department, various people, right? The person who is into, let's suppose, into a customer relationship department, the person who is into, let's suppose, into a customer relationship department has to understand what your customers are exactly expecting, has to understand what your customers are exactly expecting, and that person has to communicate the same thing to your research and development department, right? Why this data mining comes into picture into internal customers? Data mining कहाँ से आया? Internal customer के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? Where the research comes into a picture when you talk about the internal customers. Let's suppose there are different departments. The person who is working in a customer relationship department, or the person who is working into your research and development department, right? ये दो department को हम consider करते हैं. Then the production department and all these are the like the people, those who comes into pipeline of that manufacturing process, right? So क्या होता है? The person who is into a customer relationship department understands that customer needs something different in our product. So he understands the customer behavior. He does his own research. He does his own surveys to understand the customer relationship, customer behavior, and then he puts that customer behavior, customer research in front of the research and development team. So what they do? They make changes. They incorporate those changes. They again make research into that particular product and put those things into final product to be produced. Then they communicate, research and development people communicate a prototype model to a production department, ask them to find out the costing, pricing. So raw material, again procurement team will come into picture. सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, and they all have to compile for satisfaction of your customers requirement as per the suggestions received from customer relationship department. So you as a marketer, you as a market research person has an opportunity to identify, to collect, to gather data from all these internal customers. एक तो आप research कर सकते हो where the customer relationship department has collected the data, what kind of data they have collected, what kind of data they have collected, what kind of outcomes they have suggested. Is there any opportunity for you as a market research to inspect the communication between the customer relationship department and the research and development department? यहाँ पे आप research कर सकते हो, right?
So when you talk about mining internal customers data, you have to understand the problems, issues, opportunities in all those internal departments. Are you getting my point? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? What is internal department? What is internal customer? अगर कुछ क्लैरिटी है तो आगे बढ़ने में पॉइंट है, राइट? Sir, only stakeholders are the internal customers. Not all the stakeholders are the internal customers, right? Not all the stakeholders are the internal customers. Stakeholders, those who are inside the company, within your company, right? Stakeholders who are within your company are your internal stakeholders, internal customers. Because बाहर के stakeholders को पता ही नहीं है आपके company में क्या हो रहा है. And when you want to have a effective product manufacturing or effective business, you have to mine a data from your internal customers. That is the concept of data mining from internal customers. Mining data means excavating the data, identifying the data, collecting the data from your internal customers. And which are the fields in which you can collect that data? The fields I was talking about, the information given from customer relationship department to a product research and development team, then from research and development team to a production team, then from production team to a test marketing team and quality checks team, right? This communication has to be maintained in a most effective and efficient way. Then only the outcome of your company would be profitable thing, or it will be satisfying the actual need of customers. So there are different opportunities in order to mine the customers data, and most of the times the internal customers data is mined through a survey. क्या किया जाता है? It is mined or mined in the thing, mining in the thing. You all know what do you mean by data mining, right? So internal customers data is collected through the surveys, and from what kind of internal customers? It is maybe from different functional employees, maybe from different departmental heads, maybe from different people working on a various small jobs. So it can be applicable everywhere. You can create a surveys as per the requirement. मैंने एक example दिया था how product upgradation happen, how product upgradation happen in the company. The example I was just talking about. जैसे customer ने कुछ बोला, that requirements, that upgrades, that feedback goes to the customer relationship department in the marketing team, right? Then that data goes to the research and development. Ki customers are saying like this, we need to upgrade our product according to this. Find out the feasibility, check out the costing, pricing and all. So when it goes to the research and development team, they talk about the feasibility of upgrading that product according to the need of customer. So there also, you as a marketer, you as a owner, or you as a researcher can make a survey with the customer relationship team, that what kind of issues you face during transforming your information from your department to the research and development department. Because see, read this dark line. In every company, there is always a organizational politics and ethical issues are always there, right? So you as a marketer or owner of that company has to understand, is there any issue in a smooth communication from one department to another department? Are people taking the suggestions? For example, कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट को पता चला कि XYZ प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने, वो प्रोडक्ट का चेंजेस का लिस्ट लेके गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बोल दिया, निकल यहाँ से, हमको नहीं पता है, वी कैन नॉट मेक दोस चेंजेस, इट्स नॉट फीजिबल, टेक्निकली ऐसा होता नहीं, वैसा होता नहीं, हो गया खत्म. दैट चेन हैज बीन ब्रोकन डाउन देयर ओनली इटसेल्फ, इजंट? वहीं पे चेन ब्रोक हो गया. Yes sir. So वो चेन ब्रोक होने से पूरा कम्युनिकेशन फ्लो कट है, एंड द अपग्रेडेशन विल नॉट हैपन, एंड योर मार्केट शेयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज in a very short time span, because you are not satisfying actual need of your customer. So to avoid such kind of clashes, to avoid such kind of things in your organization, you have to look for a data from your internal customer itself, right? And understand the logic behind the concept. Concept बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि ये एक इशू को सॉल्व करने के लिए इंटरनल माइनिंग होता है. Internal mining is done according to a different departmental needs by different managers. Internal data mining can be happen in a HR department also, to avoid what is happening, why my employees are leaving the company, whether they are satisfied or not satisfied, right? So internal data mining, I am only talking about marketing aspect.
internal customers data mining, and everything has an impact on your customer satisfaction, everything has an impact on your market share, everything has an impact on your profitability, right? HR डिपार्टमेंट में कुछ इशू हो गया, एट्रिशन बढ़ गया, people are leaving your job very frequently, you need to hire new people, hiring का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट है, आने वाले लोग 6 महीना कंपनी में हनीमून पीरियड पे रहेंगे, मजे करेंगे, सीखेंगे, 6 महीने के बाद फिर से जुड़ जाएंगे। सो हर 6 महीने लोग आएंगे, टाइम पास करके निकल जाएंगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी एंड द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर एम्प्लॉइज इज ऑन द टॉस, right? So internal data mining is very important in every department. Though it's a marketing department, I was giving you example of how product get developed into a different phases, and how internal research is helpful for a better product development. वो मैं बता रहा था, but it is applicable in all departments. Like supply chain में भी आपको internal research करना पड़ेगा, internal functional research करना पड़ेगा. You have to identify what kind of method people are using to manage your inventory. You have to identify what kind of people, what kind of processes your people are adopting in order to select the vendors. अपने वसीले से, सेटिंग से अगर वो वेंडर सिलेक्ट कर रहा है सप्लायर से कमीशन लेके, तो नहीं चलेगा ना. So there also you have an opportunity to find out the required information in various departments. So internal data mining is a function of research team, in any company or research department, let's suppose, for that matter, or any consultancy to which you have hired your research activities. जरूरी नहीं कि हर कंपनी के पास अपना रिसर्च टीम हो, अपना रिसर्च डिपार्टमेंट हो, राइट? मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कंपनीज नहीं रखती है. इट हैज बीन आउटसोर्स्ड टू वेरियस पीपल फॉर अ डिफरेंट फंक्शनल एंड रिक्वायरमेंट बेसिस वर्क, राइट? बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज भी मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं रखती है. दे आउटसोर्स इट टू अ डिफरेंट कंपनी. फॉर एग्जाम्पल लाइक फाइनेंस में, अगर फाइनेंस में मार्केटिंग रिसर्च करना है, यू विल से दैट फाइनेंस में मार्केटिंग रिसर्च, फिर भी उसको मार्केटिंग रिसर्च कहा जाएगा. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च, राइट? अगर फाइनेंस में कुछ रिसर्च करना है तो योर कंपनी कैन आउटसोर्स इट टू अ डिलॉयट, केपीएमजी, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, विप्रो फॉर दैट मैटर, राइट? सो Like the freelancer, yes, like freelancing, sir. Like a freelancer has to be come to the companies. They have to be making the research, all the things. फ्रीलांसर्स को भी आउटसोर्स किया जाता है, नॉट लाइक दैट. फिर फ्रीलांसर्स को भी किया जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसीज और स्पेसिफिक इश्यूज. कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज सॉल्व नहीं कर सकते, देन इट गोज टू द फ्रीलांसर्स. फॉर एग्जांपल हैकिंग, राइट? Yes, sir. हैकिंग का इशू अगर है, your data is being hacked by someone, you want to get a solution for that data restoration. You went to a TCS, IT, Wipro, जो भी है उनके पास गए आप. They said that they tried it, they could not do it. So what do? You have an option to go with the freelancer. So होता है, freelancing भी होता है. In most of the times it goes to the KPOs, knowledge processing outsourcing जो होता है, knowledge process outsourcing KPOs में जाता है, right? So your advertisements, your promotional issues goes to the event management companies, advertisement companies, advertising agencies and all. So understanding this internal data requirement and internal data collection, you have to take internal data into consideration in every function of your business. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते. लेट्स मूव अहेड. क्लियर है सबको? इंटरनल कस्टमर्स क्या है, इंटरनल कस्टमर्स का डेटा कहाँ से आता है, कैसे आता है, समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कस्टमर्स? इतना तो बेसिक समझो, बिकॉज ये क्या ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको 1 या 2 सेशन में समझा सकता हूँ. प्रैक्टिकली अगर हम इंटरनल डेटा का कस्टमर्स का केस स्टडी लेने गए तो इट विल अगेन हैव द सर्वे, क्वेश्चनर, स्पेसिफिक प्रॉब्लम. बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्वालिटेटिव नेचर में. जहां प्रॉब्लम आता है उस डिपार्टमेंट के लोगों से आप डिस्कस, या प्रॉब्लम आने से पहले भी आप आइडेंटिफाई कर सकते कि क्या होने वाला है. इन HR डिपार्टमेंट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ योर एट्रिशन इन द HR डिपार्टमेंट. ट्रेंड किया जा सकता है. सो इट्स इंटरनल कस्टमर डेटा व्हिच विल हैव एन इंपैक्ट ऑन ओवरऑल प्रोसेस, and overall process will have impact on your production and then on your overall business. So as a researcher you have to look after internal data mining, and that can be done with the surveys, that can be done with the observations, that can be done with the internal evaluation, examinations, right? आप written examination ले सकते हो,
आप सर्वे ले सकते हो, आप इंटरव्यूज ले सकते हो, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो, right? Those all things can be done for the internal customer data mining I am talking about. I am not talking about understanding any data which is in terms of sales, profit. That is different case. That is operational data. That is not internal customer data, right? So there are two functional data in the organization. One is operational, one is internal customer data. So when you talk about internal customer data mining, you are talking about the behavior of your individuals in the company. So that can be like by observation, by interviews, so many things, by surveys, by focus group interviews, as I was talking to you all. So all the methods of qualitative data collection can be used. All the methods of primary qualitative data collection can be used to collect data from your internal customers. Clear? Any doubt? Quickly within a minute. No, sir. Okay, so we shall proceed, I think, and then we will look after the this diagram will let you know about the functional internal data mining. कहाँ data mining किया जा सकता है, and what are the use of and what kind of data you can identify from those departments. So in terms of human resource departments, you can have an internal data collection, and which will talk about in overall service quality of your people to organization and from organization to people also. Always remember, the service quality is nothing, is not like service quality is not something which is only from the people to company, from the employee to company. Employee to company नहीं है, company को भी employee को कुछ देना पड़ता है in return. So service quality is a both side aspect. It's a bidirectional process in which employer also have to maintain a quality of service towards his employees, and his employees also have to maintain a quality of service towards their employer, right? So internal service quality, right? Employee freedom, employee loyalty, employee retention, employee productivity. This can be the aspects in which you can use your internal data collection and internal data processing. अब data process कैसे करना है? For that we had a different techniques and tools already studied, right? Percentage, chi-square, regression, correlation, factor analysis. ये कहाँ लगेगा? It is researchers' jobs to identify. But data कहाँ से मिल सकता है? You will have to collect data from your internal customers in multiple ways according to the different issues. आप बोलोगे कि हर टाइम कौन सा सर्वे लगेगा? There is nothing standard, right? It does work according to the need of companies. It does work according to the situations. It does work according to the size, nature of department, number of people working in the company. अगर 10 लोगों का ही कंपनी है तो do you need to go for survey for internal data mining? Hopefully no. You can just have a board meeting, make them sit into the discussion room and get it solved, isn't it? So it depends, but just understand the concept. What do you mean by internal customers? What do you mean by external customers? Difference समझो. Questions आ सकते हैं. Those questions into your MCQs also. Then marketing team में, so customer satisfaction. This all results into external service value, right? External service value. They create a product, and then product goes to the customers, and then you can look after its profitability. Sell करने के बाद profit में है, loss में है, that can be a financial data mining from your different department. Then marketing में customer satisfaction, customer loyalty. There are a few more things like market segment, market size, and all, right? So this will help people to understand the interfunctional relationship, interfunctional harmony, and departmental synchronization of your entire company. That will be the importance, that will be the application, or that will be the use of your internal data mining research. Internal data निकाल के क्या करोगे? Interfunctional harmony, interfunctional relationship, and like synchronization among different departments you can maintain, right? Clear? I will stop about this particular thing here. And another thing is like sales data
आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ दिस सेल्स डेटा मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार मैंने सेल्स डेटा का डिस्कशन किया है। सेल्स डेटा एंड मैंने बताया भी है आप लोगों को, इज लाइक sales data mining, right? Sales data mining can be a kind of recording and utilizing your sales figures data for future decision making. डीमार्ट में जाते हो, बिग बाजार में जाते हो, या फिर किसी ब्रांड फैक्ट्री में, अच्छे रिटेल स्टोर में, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर में जाते हो तो क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर में जाते हो तो क्या होता है? एवरीथिंग इज बीइंग स्कैन्ड, everything is being scanned with your barcode and all, right? So every piece or every single unit of any kind of product which is moving outside of your department, outside of your store, is being recorded in the computerized system, right? उससे क्या होता है? You get a reports every day. You get a report every day. Similarly, when you talk about the sales data of a company, which is gathered, collected from its different sales people, from different sales units, sales heads, area wise data आना चाहिए। different area head आपको data दे provide करेंगे कितना sale हुआ है। if anyone closely associated with marketing representatives, anyone from your family is marketing representative, MR in medical field, you might have observed their data sheet, वो कैसा data maintain करते हैं। every MR, marketing representative, maintains his daily data sheet. It goes to his area manager. Every area manager has like 50-100 people working under him. In every evening he updates that data in his computer store, in his computer software, and कौन से salesman ने कितना sell किया है, and that data goes to the central department, and every day they get the daily sales figures of the organization, right? Nowadays it has become everything using technology, everything using different software. पहले कैसा था? हाथ से होता था 10-20 साल 25 साल पहले, but the decision making was not that fast, decision making was not that quick those days. It used to take few days to calculate पिछले महीने में कितना सेल हुआ। ये करने के लिए उसको 1-2 महीने पहले का ही सेल्स फिगर्स पता चल जाती थी। अभी क्या है, आज का आज सेल्स फिगर पता चल जाता है। व्हाट इज टुडे सेल्स ऑफ द कंपनी इन एंटायर इंडिया इन वन डे, you will get to know that by the end of day, right? So maintaining records of your sales data, sales figures, is something that you can do with the help of internal customers, so sales data can be easily managed, understood and identified by the sales customer. Clear? Any difficulty? Any difficulty, guys? No. Okay, should we proceed then? And there is something called in-store shopper. Yeah, I'm going as per your syllabus. I'm just trying to give you the gist of these concepts theoretically. Once we discuss this concept theoretically, आज तो मैं आपको एक्सेल शीट में डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ाने वाला था, प्रैक्टिकल ट्रेंड एनालिसिस, प्रैक्टिकल मूविंग एवरेज एनालिसिस, but I thought as per your syllabus I should give you the gist of those theoretical concepts, and then I will move ahead in the next session about moving average, about trend, about forecasting and all, right? Let's discuss about in-store shopper marketing research and retail shop audits, right? So in-store shopper marketing research, right? In-store shopper marketing research is the concept which talks about the research activities conducted inside the stores, inside the organized retail store, right? आप बोलोगे अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड में रिसर्च भी अनऑर्गेनाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल, यू वेंट टू अ लोकल मेडिकल शॉप नियर बाय योर होम, you might have seen that you went there and you have asked, can you give me like rally spray of 50 ml? तो बोला नहीं सर 50 ml का तो अवेलेबल नहीं, आप 100 ml का ले लो, राइट? एंड अगर आप लेते भी हो नहीं भी लेते हो तो वो तुरंत वापस जाता है, अपना एक शॉर्ट लिस्ट होता है उसके पास। क्या होता है? शॉर्ट लिस्ट बनाता है, वो तुरंत रजिस्टर में लिख देगा रैली स्प्रे 50 ml इज नॉट अवेलेबल, राइट? सो वो शॉर्ट लिस्ट बनाता है। सो रिसर्च हैपेंस एवरीवेयर,
People maintain data for their own decision making. Without data you cannot even move. Maybe it is in a formal, informal way, that is different story, right? But everyone has to have a data for decision making. वो नोट करता है 50 ml रेल स्प्रे शॉर्ट, हर टाइम जब भी कस्टमर्स आता है तो वो नोट करके रखता है, राइट? ही कीप्स नोटिंग इट डाउन कि क्या हो रहा है. But in organized retail stores, what will happen, like DMart, like Big Bazaar, like Pantaloons, do they need to go and check? Do they need to go and check the availability and stock? क्या लगता है आपको, चेक करना पड़ेगा? Yes, no? What do you think? Because they have their own system of scanning every product. What is your opinion? Do they need people to go and check the shelves? आपने ऑब्जर्व किया है? शेल्फ्स में जाके चेक करते हैं वो लोग, क्यों करते हैं? कंप्यूटर में तो पता चल जाएगा ना उनको कितना क्या हो रहा है. Sir, to show us that they are serious about our wants. Okay. But understand one thing, though it's a computer generated, everything is being clicked there. अगर DMart में in short in store audit करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा, right? You will never get to know that. मतलब you will get to know very late that the entire items of that particular shelves has been consumed. फटाफट किसी एक कस्टमर ने निकाल के डाल दिया, क्या करेगा? किसी, let's suppose there are few 100 units of soap in one shelf in a DMart. एक कस्टमर आया, 100 लोग निकल के चला गया. चला जाने के बाद जब तक वो बिल बनाता है, जब तक कंप्यूटर में सिस्टम में जाता है, सिस्टम आपको अपग्रेड करता है और आपका सिस्टम का रिपोर्ट निकल के बाद आपको पता चल जाएगा वहां के 100 सोप खत्म हो गए, राइट? इट कैन हैपन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इफ इट इज इन हाई डिमांड. पीपल आर मूविंग अराउंड इन अ डीमार्ट इफ यू ऑब्जर्व, एंड हर लोग वो शेल्फ में जाके चार आइटम चार पीस निकाल के ले रहे. सो दैट विल गेट कंज्यूम्ड वेरी क्विकली. So your system also will not be helpful for you to make a proper decision and to maintain your stock in the right way. So what you have to do, you should have people, those who are taking audit of all the shelves and products in your retail store, right? So when you talk about in-store shopper marketing research, it has to be done by the people, those who are auditing the retail shop. So retail shop auditors are required there in your retailing outlet. They observe the behavior of people, they observe the frequency of purchase of that product, they observe, like sometimes what happens, we go to the DMart, we take a particular product in our hand, we look it like this, aisa dikh raha hai, kya dikh raha hai? Behavior of the people is like, if product is not good in terms of looks, product is not good in terms of its dimensions, weight, size, generally क्या होता है, लोग ऐसे रख देते हैं, फेंक देते हैं, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड माइंडसेट ऑफ द कस्टमर्स. आप खुद के बारे में भी सोचो. वो कभी कभी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा दिख रहा है, दो इट्स अ कॉस्टली प्रोडक्ट, आपका हिम्मत नहीं होगा, आप फेंकोगे नहीं उसको, राइट? यू विल पुट इट इन अ जेंटल वे. सो दिस रिटेल शॉप ऑडिट्स एंड दिस इन स्टोर मार्केटिंग रिसर्च हैज अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर. देयर द ऑडिटर्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च. दे टेक द नोट्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन. आप जब अभी डीमार्ट में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, देयर आर पीपल दोज हु आर मूविंग अराउंड विद नोटपैड एंड सम राइटिंग पैड एंड पेन, एंड दे आर टेकिंग इज लाइक this that. We don't know what they are writing, we have never tried to check out also, but being a marketing person I did that. So what they check, कभी कभी वो ये भी लिखते हैं कि जो प्रोडक्ट है उस शेल्फ में गिरे हुए प्रोडक्ट कितने हैं, पड़े हुए, मतलब अच्छे से नहीं रखा हुआ है बहुत. आप ठीक से जाके देखना, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं डिमांड में जहां पे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोस प्रोडक्ट यूनिट्स इन द शेल्फ इटसेल्फ इज नॉट इन अ प्रॉपर वे. रखने वाला सही रखता है बट कस्टमर्स उसको बाद में गिरा के चले जाते हैं, या फिर वो गिर जाता है कस्टमर से बाय मिस्टेक, बिकॉज मे बी अ प्रॉब्लम इन इट्स पैकेजिंग, प्रॉब्लम इन इट्स साइज एंड डायमेंशंस. कोई प्रोडक्ट ऐसे है जो मतलब चलते चलते गिर जाते हैं. फॉर एग्जांपल टूथब्रश, राइट? आप डीमार्ट में टूथब्रश कभी परचेस किया होगा, याद है आपको कैसे होता है? डीमार्ट का जरूरत नहीं, किसी भी सुपरमार्केट में, राइट? कितना भी उसको स्टैंड में रखो वो नहीं रखा जाता है, वो गिर जाता है, राइट?
तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी हैं, एंड auditors has to observe those things. Auditor has to understand what problems people are facing in purchase, and they have to maintain a record. They have to suggest it to the companies, suggest it to the storekeeper, store manager, what has to be done to improve this particular thing. And in-store shopper research is not only about the behavior of consumers, it is also about managing the inventory, it is also about managing the stock in your particular store, right? So management of stock is not an issue by the time you are using computers. जब तक आप computers use कर रहे हो, stock management or inventory reports should be generated every single day in a evening. So that would not be a big challenge. But as I told you, somewhere if the products are being consumed very quickly from that shelf, the storekeeper or store manager also would not be understanding कि बाबा ये कैसे हो गया. By the time तो वो खत्म ही हो जाएगा. For example, किसी ने 100 सोप निकाल लिए, next customer आएगा, उसको सोप नहीं मिलेगा. So you have lost your customers, right? So store managers need to have auditors also, right? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Why this research is required and how the audits can be done? Are you getting my point? Yes, sir. I only get one response from the rest all the people, I think. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ बैठ के गला तान रहा हूँ मैं, कुछ तो रिस्पॉन्ड किया करो यार. Right? I know. Yes. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? जी Yes, sir. सर. Very much. Yes, sir. खान सर के वीडियो कितने लोग देखते हैं? खान सर पटना वाले देखते हो ना? Yes, sir. कैसे पूछते हो? समझ में आ रहा है ना बबुआ? ऐसे ही Yes, sir. डायलॉग बाजी भी करते हैं बहुत सारी, but his method of communication is very kind of desi, which touches your heart, right? Yes, टच कर जाते हैं बात करते करते. चलो गुड. सो आप लोग एक्टिव हो, आई एक्सपेक्ट, आई अज्यूम दैट आप लोग एक्टिव हो, आप सुन रहे हो. अगर बोल भी नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस म्यूटिंग अनम्यूटिंग एंड वर्चुअल थिंग, बट आई अज्यूम दैट यू ऑल आर लिसनिंग मी एंड यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग, राइट? नहीं है तो रेज योर हैंड, यू हैव एन Yes. ऑप्शन विथ यू टू स्पीक इन बिटवीन ऑल्सो. सो दैट्स Sure, नॉट sir. सो रिटेल आउटलेट रिसर्च. आप बोलोगे सर 10 मिनट में पूरा रिटेल रिसर्च पढ़ा दिया. नो, नॉट एट ऑल. वो मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है. रिटेलिंग रिसर्च इज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, इज अ स्पेशल सब्जेक्ट इटसेल्फ इन अ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, राइट? रिटेलिंग रिसर्च बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. देयर आर मेथड्स बहुत सारे हैं बाय विच यू कैन डू अ रिटेलिंग रिसर्च. सो but in this particular subject we have to understand how you can use research in the retail shop management only. Application सीखना है, ट्रेंड सीखने हैं, how you can learn trends. ट्रेंड में आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सेल में करके दिखाऊंगा. सो यू जस्ट कीप रीडिंग द स्लाइड्स, बीच बीच में आपको पता चलते जाएगा क्या सीन है. सो रिटेल ऑडिट इज अ स्मार्ट चेकलिस्ट. रिटेल ऑडिट इज अ स्मार्ट चेकलिस्ट दैट एवरी ऑडिटर इन द स्टोर हैज टू मेंटेन. ये सब आपने देखा होगा, बट हम कभी सोचते नहीं है कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है डीमार्ट में. हमको लगता है वो आया है प्रोडक्ट रखने के लिए, देखने के लिए. वो देखता नहीं है. इट इज अ सिस्टमैटिक चेकलिस्ट और सिस्टमैटिक रिपोर्ट दे हैव इन देयर नोटपैड. वो जो राइटिंग पैड रहता है ना, उसके साथ एक सिस्टम से रहता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, सी देयर आर few companies sends their own people in the retailing stores. जो जॉब रैकर्स बोला जाता है उसको, जॉब रैकर्स, राइट? कंपनी सेंड्स देयर पीपल इनटू द समथिंग, सम कॉन्सेप्ट इज जॉब रॉकर है, रैक जॉबर्स ऐसा कुछ है, आप गूगल कर लेना. कंपनी सेंड पीपल टू द रिटेल स्टोर्स टू ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स अबाउट देयर प्रोडक्ट. तो ये लोग क्या करते हैं, वहां आके रिटेल स्टोर में जाके एक ऑब्जर्वेशन करते हैं. रिटेल स्टोर में जाके घूमते रहते हैं. दे ऑब्जर्व पीपल फ्रॉम द डिस्टेंस हाउ दे बिहेव अबाउट द प्रोडक्ट. मैंने बोला ना, कोई पैकिंग अच्छा है, कोई प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है,
तो लोग उसको ठीक से ट्रीट करते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है तो फेंक देते. सो लाइकिंग, डिसलाइकिंग, frequency, the preferred unit size of your product can be observed from the retail stores also. हर टाइम जाके सर्वे करने की जरूरत नहीं है, right? So you can send your people, those who are observing behavior of your people in the stores. So company sends their representatives, employees in the stores also, and they checks how people behave about that particular thing. So this is job trackers kind of thing. That is also kind of retail shop audits that companies does, right? So retail shop audits can be done as per the prescribed checklist, or it depends on the type of store, nature of products, kind of business patterns you have. इन सब चीजों पे वो वेरी करेगा. So एक स्मार्ट चेकलिस्ट की तरह किया जाता है. दे हैव अ स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ नोटिंग डाउन देयर ऑब्जर्वेशन. ऐसा नहीं कि एक रफ पेपर दिया और बोला लिख के आओ जो लिख के आना है. That doesn't work, right? उससे क्या होगा? The person who is gone for that audit will write whatever he understands according to his standards, right? वैसे नहीं होता है. जो required observations है उसका एक standard format बनाया जाएगा, and accordingly the people will be sent on the auditing purpose of your retail stores. It is based on the form, best practices, pictures, supporting files, conditional items, critical items, and actions plans and recommendations. So it is based on the best practices pictures, in the sense how you can portray your own department, your own shelf and rack in that department in the supermarket. That is like you can use what are the best practices of your shelf management into the supermarket. सुपरमार्केट में वो शेल्फ मैनेज करने के लिए आप अपने ब्रांड की तरफ से क्या करते हो? आर यू सेंडिंग फ्यू गुड स्टिकर्स, पिक्चर्स? डीमार्ट में लाइफ बॉय बिक रहा है, एवरीवन नोज, बट लाइफ बॉय हैज टू टेक केयर दैट इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द कस्टमर्स इन डीमार्ट. उसके लिए आप क्या प्रैक्टिसेस करते हो? हाउ डू यू मैनेज योर रिटेल स्टोर? नहीं तो आपको क्या लगता है, यू हैव अ टाई अप विद डीमार्ट एंड यू आर पुटिंग योर सोप देयर इनटू द toiletry department of that DMart store, and you expect your customers to come and purchase by themselves. You are just putting soaps there. ऐसा नहीं चलता है. What kind of supporting documentation, files, pictures, and marketing material you keep there to make your product in the notice of customers? That matters a lot, right? So that can be a practice in which you can manage your stores in right way. So these things has to be taken into picture. Critical items and action plan recommendations is something like critical items in the sense, as I told you, sometimes few items wipes out very quickly from the shelf, and sometimes few items be there, be unsold for longer time. So both are the critical things for the marketers. Both are the critical things for the store manager. ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट बहुत क्विकली बिक गया तो क्रिटिकल में नहीं आएगा. It will be in the critical because it is creating operating issues for the store and retail manager. क्योंकि वहां पे नहीं है तो customers will demand it, and customers will have like unsatisfied kind of feeling. आप डीमार्ट में गए, बिस्किट लेने गए, आपको गुड डे बिस्किट लेना है. अगर गुड डे बिस्किट स्टॉक आउट हो गया वो शेल्फ से, आप तो क्या मैनेजर को जाके पूछोगे नहीं मुझे गुड डे बिस्किट दे दो करके, राइट? ऐसा आपके साथ अगर 4-5 बार हुआ डीमार्ट में या मोर में या किसी सुपर स्टोर में, आप बोलोगे क्या है ये डीमार्ट में जाके, मतलब जो चाहिए वो तो मिलता नहीं, खाली पड़ा रहता है हमेशा. आई विल नॉट गो देयर. सो इट विल नॉट टेक मच टाइम फॉर यू टू मेक योर माइंड डाइवर्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांड, राइट? सो इट इज a vast kind of thing, different kind of perception of the people, perception of the marketer to look after what is happening in terms of critical items of your brand. So it's not only a brand, it's not only a retailer's responsibility to maintain those things, but the brand people has to go and also check कि उनके ब्रांड के बारे में क्या हो रहा है स्टोर में. स्टोर वाले को कोई लेना देना नहीं. रिटेलर हैज नथिंग टू डू विथ द सेल्स नंबर ऑफ फिगर. डीमार्ट वाले को क्या करना है? लाइफ बॉय बिके, संतूर बिके या और डेटॉल बिके, he has no issues with that, right? It is also a responsibility of the manufacturer, brand owners, to identify their brand performance in various departments, right? So critical issues hai that has to be taken into consideration into the retail shop research also.
So marketing research is applied there also, and these few best practices can be done in order to manage the in-store shopper research for your thing. Audits allow standards to be checked, deficiencies to be tracked, assigned and resolved when area districts and sales managers visits to the stores, right? अगर आपका store audit proper है, so when the sales managers, area managers or company people visits your stores for their own issues, you can tell them the deficiencies like sir time में supply नहीं हो रहा है, product quality खराब आ रहा है. When your product reaches to the store, out of 100 10 products are damaged, लीकेज है, पैकेज फटी है, टूटा है, क्या हो सकता है? There are hundreds of issues that you can have into a store management, right? And those can be communicated to the people, managerial and marketing department people of various companies. So that's the benefit of taking audits. An audit allows head office to guarantee company standards, programs and policies are deployed in full time in every store. So store audits, see, DMart is a multi-brand FMCG store, so they may not require the high connectivity with all the parent brands. But if you talk about the franchising franchising stores like showrooms, authorized dealerships, then you should have a very good connect with your parent brands also, right? If you are, let's suppose, a owner of store from Louis Philippe, LP, the apparel brand, right? And then you need to guarantee the standards maintained. You need to guarantee a procedures, SOPs, facilities, everything given in your store to the customers, and that has to be ensured with your parent company. कि मैं आपने जो recommended prescriptions दिया था franchising के time पे, that all things are being followed in my store. Let's suppose Domino's का franchisee, McDonald's का franchisee. You all have to ensure things are happening according to the company standards, right? अगर नहीं है तो company will take out your franchisee. Company will never compromise on their services to be provided to the customers under their brand name, because that will hamper a brand image of the company, and that's not good for the any brand, right? So it helps, auditing helps you to ensure. So being a researcher, you have to keep your audits on. Being a manager of that particular store, research on रखना है, auditing लेना है. Audits can be having different parameters. Audits can be done for number of units, pricing, size, variants के बारे में auditing किया जा सकता है, consumption speed का audit हो सकता है, pricing audits हो सकते हैं, discounting audits हो सकते हैं, right? Those discounting audits and pricing audits also can be traced into the store itself. आपको ये पता चल जाएगा अगर डिस्काउंट किया है, 10% का डिस्काउंटिंग किया तो कितना सेल हो गया, 5% का डिस्काउंट किया तो कितना सेल हो गया. That things also can be managed from the store. Okay, so in-store shopper marketing research and retail shop audits helps you to inspect. Look at here, to inspect, to make your action plans, to design your task of your shelf management in the stores, and for taking any creative action in terms of decorating your shelf in a store in a creative way, or in terms of coming up with some creative discount offers, creative marketing campaigns and everything. So this retail shop research is also very much important. Look at the types of in-store shopper marketing research and retail shop audits. क्या क्या हो सकता है? Just read it and you will understand what I was talking since beginning. So shelf audits हो सकते हैं, program compliances. Shelf audits means इसमें क्या हो सकता है? Program compliances, in the sense shelf audit will help you to understand whether the movement of your product from that shelf is compiling to your target movement. आपने suppose सोचा था कि एक दिन में मेरे 100 units of Lifebuoy soap should be sold out from the DMart. It is your program plan. It is your plan. Per day 100 has to be sold. So audit will help you to understand, is it complying your plan? So a planogram compliances, it means like planogram is like
a chart you have developed for sales planning, maybe in terms of units, maybe in terms of different variants. 75 ग्राम के सोप्स कितने बिकेंगे कितने टाइम में, 75 ग्राम के रोज वाले, सैंडल वाले, एलोवेरा वाले सोप्स कितने बिकना चाहिए कितने टाइम में. That kind of planograms can be verified whether it is being compiled in the store or no, can be identified by doing shelf audits, right? No product holes, it means how many times your shelf is being out of stock, right? How many times your shelf in that store is being out of stock, and what can be done to avoid this particular situation. As I told you, out of stock can be in a second. एक बंदा आया 1000 सोप लेके चला गया, क्या करोगे? So this no product holes can be identified by the audit, and so auditors, manual auditors are also required in the stores along with your digital thing. आप digitally लगाओ, that will give you the long term reports, but situational and quick reports on actual shelf reports could be generated with the help of shelf audits and auditing people only, right? Then facings, pricings, correct SKUs. Facings in the sense how it looks, how it is being placed. Facings is how it looks, how it is being placed. Is it attracting people? Is it not attracting the customers? Those issues can be solved with the help of auditing. Pricing, yes, definitely. When you visit stores like DMart, you will have Dabur, you will have Parachute, P&G, different things together in terms of hair oil. Let's suppose hair oil के बहुत सारे डिपार्टमेंट एक के बाजू में एक रखा हुआ है, क्वांटिटी, उसका यूनिट, sales price, discounted price, everything is labeled there, right? So that helps customers for easy comparison between the brands, and that pricing can change the consumer's mind. So you as a marketer or you as a store manager has to go and visit the stores and take your store audits to understand pricing differentiation, pricing patterns of all the competitors, and how behavior selection of customers is dependent on the pricing pattern of that particular shelf. तो shelf में pricing कैसा है वो देखने के लिए आपको audit लेना पड़ेगा. Correct SKUs. SKU is stock keeping units. Correct SKU is stock keeping units, and stock keeping units, the latest example of stock keeping unit is a barcode, right? आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ SKU लिखा हुआ है. पहले क्या होता था, बैच नंबर होता था, लॉट साइज होती थी, राइट? अब क्या है, बारकोड है. अभी बैच नंबर होता है बट वो बारकोड के अंदर होता है, राइट? तो पहले क्या आता था, बैच नंबर आता था. अगर आप याद करोगे 5-10 साल पहले जब आप 10th-12th में थे तो आपने देखा होगा हर टाइम मम्मी पापा कुछ लेके आते थे, उसका बैच नंबर देखते थे, बैच नंबर कितना है, प्राइस कितनी है, एक्सपायरी डेट क्या है, अकॉर्डिंगली. अभी SKU is in the sense the unit, the code which or the figure or code or numbering which differentiate your product unit from different other unit. एक यूनिट से दूसरे यूनिट को डिफरेंशिएट करने वाला. सो हर प्रोडक्ट के ऊपर करेक्ट SKU लगा हुआ है या नहीं, अगर नहीं है तो क्या होगा. फॉर एग्जांपल 90 रुपीज का हेयर ऑयल का बॉटल डीमार्ट में रखा हुआ है और उसने डीमार्ट में सोचा है कि अब इसको हम 85 रुपए में बेचेंगे, तो उसने क्या किया, 5 रुपीज का डिस्काउंटिंग किया. अगर उसके ऊपर वो डिस्काउंटेड प्राइस वाला बारकोड नहीं लगाया तो जब वो स्कैन होने के लिए जाएगा तो वो ओरिजिनल बारकोड पे प्राइसिंग पे स्कैन होगा. सो दैट इज अ रॉन्ग SKU. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. right? So that is a wrong SKU, and self audits helps you to identify correct SKUs, and that helps you to maintain your SKUs in a proper way. So it differentiates from one unit to another unit and helps for you. Next class कब है? दो बजे. Sir, do 2 बजे से 2 PM. 2 बजे. Can I have 10 minutes more? अब कोई नहीं बोलेगा. yes, sir. हाँ सर, ले लो सर. Okay, just give me a 5 minutes. I will complete this particular thing so that in next class we will go to the trend analysis, how you can check the trends in different scenarios. Like let's check forecasting, demand forecasting पढ़ के आएंगे. आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, you all have to
स्टडी इकोनॉमिक्स पार्ट वाला डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड स्टडी करके आना है कल आपको, राइट? एवरीवन हैज टू बी, कल इन द सेंस नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, you all have to be prepared with the thing which is talking about demand forecasting. What are the different methods of demand forecasting and all, right? So promotional audits, अब ये सब चीजें आपको समझ में आ गया। एक बार समझ में आ गया सेल्स ऑडिट क्या है, शेल्फ ऑडिट क्या है, फिर प्रमोशनल ऑडिट्स क्या है। हैव योर कंपनी पुट प्रॉपर एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स, प्रॉपर बैनर्स, प्रॉपर कियोस्क, is it presented in a right way in a store? That matters in a promotional audit. So store audits can be done for the product promotional activities also. आपने कोई ऑफर दी है प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन ऑफर ऑफ 25% एक्स्ट्रा फ्री इन द प्रोडक्ट पैकेज। टूथपेस्ट में आपने 25% एक्स्ट्रा दिया, राइट? और वो ऑफर आपके प्रोडक्ट पे लिखी हुई है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, बट वो शेल्फ में लिखी हुई नहीं है, तो पीपल विल नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट ऑटोमेटिकली। 25% एक्स्ट्रा है, वो शेल्फ के ऊपर चाहिए। जहां जगह है, जहां पे स्टोर में आपको जो डिपार्टमेंट में जगह दिया गया है उसमें आपको प्रमोशनल ऑडिट्स भी लेने चाहिए कि डू योर शेल्फ्स इन दैट रिटेल स्टोर रिफ्लेक्ट्स अबाउट योर प्रमोशनल स्कीम्स एंड कैंपेन्स। वैसे होता है, देन इट इज यूजफुल, देन इट इज फाइन। इफ नॉट, यू हैव टू टेक द स्टॉक्स ऑडिट्स इन द सेंस, रिमेंबर स्टॉक टेकिंग सिचुएशन। ऑडिट्स को क्या बोला जाता है? फाइनेंस पीपल कैन अंडरस्टैंड इट, बीकॉम वाला, बट फिर भी ऑडिट का मतलब क्या होता है? हिसाब रखना। तो शेल्फ का हिसाब रखना है, प्रमोशनल एक्टिविटीज का हिसाब रखना है। शेल्फ के हिसाब में क्या आता है? शेल्फ ऑडिट में इतना चीज आएगा, प्रमोशनल ऑडिट में इतनी चीज आएगा। सीजनल प्रोग्राम्स सपोर्टिंग साइनेजेस, साइनेजेस इन द सेंस posters, banners. Seasonal programs is like if you are offering like buy one get one offer in summer for Fanta drinks or 2-liter bottle of Coca-Cola. डिमार्ट में होता है बहुत बार, राइट? इट इज ऑल अबाउट रिटेल स्टोर। रिटेल मीन्स इट इज FMCG काइंड ऑफ थिंग, फास्ट मूविंग थिंग्स। रिटेलिंग में सीजनल ऑफर्स मे बी एप्लीकेबल इनटू द नॉन FMCG प्रोडक्ट, ड्यूरेबल्स ऑल्सो। तो ड्यूरेबल्स में क्या है? टीवीज। सीजनल ऑफर का है, गणपति का सीजन आ गया, दुर्गा पूजा का सीजन आ गया, बंगाल में बहुत सारे ऑफर्स आएंगे टेलीविजन पे, इसके उसमें। दिवाली आ गया, इंडिया में आएगा। गणपति गणेश जी का सीजन आ गया, विल हैव अ डिस्काउंट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स इनटू द स्टोर्स। आर यू रिफ्लेक्टिंग दोज ऑफर्स? जब आप स्टोर के सामने जाते हो तब आपको पता है वहां ऑफर लिखा हुआ रहता है, 10% ऑफ ड्यूरिंग द रक्षाबंधन सीजन, दिवाली। तो सीजनल प्रमोशंस भी, सीजनल प्रमोशन की जो प्लान है आपके, दैट प्लान हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर रिटेल स्टोर। रिटेल में नहीं दिखेगा तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड वो कैसा दिख रहा है, कितना टाइम तक उसका विजिबिलिटी है, whether it is really recognized by your customers, these things has to be audited, right? Special displays, ads, special pricing, this has to be audited in your retail stores. Employees awareness of knowledge about promotion, employees awareness about knowledge about your promotions has to be also audited. You should go and talk to your employees, those who are standing in your retail showroom. Do they know about all those things? Have they been received a right training? Are they able to tell the customers about these things? Are they proactively telling the customers? Let's suppose you went into a Croma, right? And there you have seen 10% off on, like there they have offered 10% off on OnePlus phones, but entry में लिखा हुआ नहीं है कहीं, क्योंकि Croma में thousands of brands are there. So how they will put everybody's promotional offer there on the entrance gate or somewhere on their premises? It's not possible. So whether your employees are telling your customers, is it been displayed by communicated, or are they aware about that thing? So employees, those who are handling that particular department, should be trained how to talk to the people about different promotional schemes, right? No cost EMI can be a kind of thing. Zero down payment can be a kind of thing. Buy one get one free can be a kind of thing. 5 years extended warranty in terms of durables. Generally, buy one get one free doesn't comes into a durables, right? It is in FMCG kind of thing. Durables में नहीं होता है। कभी सुना है ऑफर buy one Tata Nexon and get one Tata Nano free? ऐसा नहीं। No, sir. Durables में नहीं होता है। So that is into FMCG goods and which is like consumer goods. Yes, Shobit बोलो। कंपनी डूब जाएंगे पहले, उसके बाद हम लोग वो लोग रियलाइज करेंगे कि हाँ चलो हो गए, हमारा खत्म।
तो ये दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एज अ मार्केटर, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऑफर्स कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, कुछ भी उठ के कहीं भी नहीं लगता है। सो वेग एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग is not applicable in your strategic decisions. In strategic decisions you have to go with the theory itself, right? आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर टाइम आपके शेल्फ में स्टिकर्स लगने चाहिए, पोस्टर्स लगने चाहिए, जरूरी नहीं है। रिमेंबर, देयर इज नथिंग स्टैंडर्ड इन द स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी में स्टैंडर्ड कुछ नहीं, स्ट्रेटेजीज हैज टू बी चेंज्ड। आप बहुत ज्यादा स्टिकर्स पोस्टर्स लगाओगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट कम दिखेगा, कचरा ज्यादा दिखेगा आपके शेल्फ में, right? So it is all about very dynamic thing. It changes according to the situation, movement, seasons, types of product, types of stores, locations also as well. For example, you might have seen the more stores as well as DMart stores. क्या difference है store more में और DMart में? Anyone? Can anyone tell me? What is difference? मे बी सर लाइक मॉल होता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, मतलब कि शायद मुझे नहीं पता उसके बारे में प्रॉपरली, बट डीमार्ट मतलब कि वो थिंग्स वहां पे रखते हैं, और जो मॉल होता है वहां बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, मतलब मॉल है थोड़ा नहीं, मोर स्टोर एंड डीमार्ट स्टोर, मोर स्टोर एंड डीमार्ट स्टोर। मोर स्टोर में क्या होता है? मोर स्टोर हैज अ लेस वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक लेस वैरायटी है, स्टैंडर्ड वैरायटी है, ब्रांडेड प्रोडक्ट रखता है ज्यादा करके, राइट? ज्यादा करके, डोंट मेक इट लाइक सर मैंने तो देखा है वहां पे जाके तो लूज प्रोडक्ट भी था, से नहीं। ज्यादा करके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रखता है, लेस वैरायटी, रेंज कम रहती है। फॉर एग्जांपल आप सोप लेने गए तो 10-20 वैरायटी का सोप रहेगा। डीमार्ट में जाओ 50 टाइप का सोप से, लोकल से लेके पूरा नॉन ब्रांडेड जेनरिक से लेके टॉप ब्रांड तक सब कुछ है, राइट? सो सुपरमार्केट, सुपर रिटेलिंग स्टोर, हाइपर मार्केट, हाइपर रिटेलिंग स्टोर, राइट? ये डिफरेंस दो स्टोर के बीच में है। वो अगर वो अलग टॉपिक ही अलग है, रिटेलिंग टाइप ऑफ रिटेल स्टोर, उसको हम यहाँ पे नहीं लाते हैं। फिर भी ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंसेस बिटवीन सच काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन यू गो आउट ऑफ, व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब शॉपिंग को जाते हो ना, you all are marketing people, right? The marketing has to be reflected in your behavior. I think I am repeating this for second time. चलते फिरते मार्केटिंग दिख जाना चाहिए आपके बिहेवियर में। आप शॉपिंग में जाते हो ना, तब आपको पता होना चाहिए क्या लगाया है, इसको क्या बोलते हैं। छोटा सा बोर्ड लगा, छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा चिपकाया है तो उसका नाम क्या होता है? अगर बड़ा कटआउट लगाया है किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो उसको क्या बोला जाएगा, राइट? व्हाट इज साइनेज, व्हाट इज लीफलेट, व्हाट इज पोस्टर, व्हाट इज बैनर, व्हाट इज कियोस्क, व्हाट इज मैस्कॉट? ये सब चीजें उसी उधर ही होती है देखने के लिए, उसके लिए डेफिनेशन रखने का जरूरत नहीं है, राइट? डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, बट ये ऑब्जर्वेशन में, आदत में डालो, हैबिट में डालो। चलो, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ, आई एम नॉट टीचिंग यू अबाउट मार्केटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग रिसर्च, राइट? तो मार्केटिंग में अगर कहीं नेक्स्ट सेमेस्टर में या उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में बात करने का टाइम आया तो वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन अबाउट दैट। सो next audit can be a financial audit for your store, that can be for your credits, for your debits, कितना टाइम का क्रेडिट दिया है आपने अपने रिटेलर के लिए, and how much profit you are generating from every single retailer. Lifebuoy can estimate उसका सुपर स्टोर, सुपर मार्केट में कौन से इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, राइट? सो फाइनेंशियल ऑडिट, स्टॉक टेकिंग सिचुएशन, प्रॉफिटेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट, all those things can be taken care into the financial audit kind of thing. HR audit of your stores is about taking number of people those who are working in your thing and all, right? So remember this audits kind of thing. Audit is about collecting, maintaining data and records of transaction happening into particular thing. Audit is what? Collecting, maintaining the record of your data, record of the transactions happening in particular thing. So it can be a shelf audit, it can be a promotional audit, it can be a financial audit, it can be a HR audit. It can also be a kind of like different, like movement audit. Movement कितना हो रहा है प्रोडक्ट का, कितना फास्ट आ रहा है, कितना फास्ट जा रहा है। ट्रांजेक्शनल ऑडिट भी हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स ऑडिट हो सकता है, राइट? कुछ समझ में आया? How many slides? 7 slides. यस सर, यस सर, यस सर। Clear? Any difficulty? सर एक क्वेश्चन था,
बोलो। सर ऑडिट एंड इन्वेंटरी दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग? audit and inventory is bit different. See, audit is a kind of calculation method. उसको स्टॉक से कुछ लेना देना नहीं. Audit is different, बताता हूँ. Audit is taking the situation, taking the stock, taking the situation, taking and calculating the inventory. इन्वेंट्री को आप अगर रिकॉर्ड करते हो, कैलकुलेट करते हो कि इतना स्टॉक में है, इतना कम है, इतना डेफिशिएंसी है, इतने यूनिट्स अवेलेबल है, इतना अभी हमको ऑर्डर करना पड़ेगा, ये सब करना मतलब ऑडिट. एंड इन्वेंट्री इज वट एवर यू हैव इन योर स्टॉक. इन्वेंट्री इज वट एवर यू हैव इन योर स्टॉक फिजिकली, एंड अकाउंटिंग फॉर दैट इन्वेंट्री इज ऑडिट. वो इन्वेंट्री का हिसाब रखना मतलब ऑडिट है, राइट. जब आप टैक्स ऑडिट करते हो, राइट, जब आप अपना टैक्स ऑडिट करते हो, सीएस करते हैं बहुत सारे टाइम. सीएस आर डूइंग टैक्स ऑडिट्स फॉर डिफरेंट clients, right? Maybe for company or maybe for individual taxation also. So audit is only a account keeping, stock keeping situation. Audit is a process of stock keeping of everything, anything you can for that matter. मम्मी भी ऑडिट करती है अपने घर में हर रोज. जब किराना लेने का लिस्ट निकालती है ना, वो that's the audit. Got it, sir. यस सर. Clear? यस सर, तो क्लियर. हिसाब रखना इज ऑडिट. और जो आपके पास है वो इन्वेंट्री है. दैट इज वट एवर यू हैव इन स्टॉक इज इन्वेंट्री. किचन में जितना अवेलेबल है वो है आपका इन्वेंट्री. बट जो लाना है, जिसके लिए आपने शॉर्ट लिस्ट निकाला है, दैट इज योर ऑडिटिंग. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग. चलो, एनीथिंग एल्स? I have to go to the faculty development program. So I think I'll stop here. We'll have a discussion about trend analysis, moving average, components and all. Few technical things we will learn in the next session in terms of Excel sheet. Next में Excel sheet सीखेंगे. फिर भी SPSS का भी मैं अभी कुछ पार्ट आपको बताने वाला हूँ, मे बी कमिंग 2-3 सेशंस. अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो मैं बहुत सारे क्लास लेने वाला हूँ आपको, कम से कम 10, 15, 20 क्लास. एग्जाम जल्दी आ गया तो 7-8 मोर लेक्चर्स, राइट. सर कब होंगे सर एग्जाम? बोला सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दैट सितंबर तो बोल रहा था वो लोग. नहीं लगना चाहिए 2nd-3rd वीक ऑफ सितंबर भी. हाँ, सितंबर 2nd-3rd वीक तक जाएगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है.